Macroeconomics, deal with total or aggregate level of output, aggregate level of consumption, aggregate level of investment, aggregate level of employment, and general price level in the economy. So this is what giving the idea about macroeconomic study. Macroeconomics is from the Greek prefix macro meaning large. इस macro का मतलब होता है large, बड़ा. And economics, is a social science. So macroeconomics is the branch of economics dealing with the performance, structure, behavior and decision making of an economy as a whole. मतलब इसमें इंडिविजुअली हम नहीं देखेंगे ना किसी फर्म को ना किसी पर्सन को, बल्कि हम एज अ होल इकोनॉमी के अंदर बिहेवियर को देखेंगे, डिसीजन मेकिंग को देखेंगे, इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे, ठीक है, rather than individual markets. This includes जिसमें नेशनल इनकम की हम बात करेंगे, नेशनल, रीजनल और ग्लोबल इकोनॉमीज की बात करेंगे. ग्लोबल इकोनॉमीज आई मीन टू से के जो बाकी अदर देन आर नेशनल इकोनॉमी